Welcome to a new episode of Vyapaar, a show where we explore the journeys of entrepreneurs and the businesses that they've built. I'm your host, Sid, and with me this week is Amandeep and Harminder, who are the founders of Black Eye Technologies. Now, before we, deep dive into the journey of the company and about the founders, I just want to give you a brief about the company and what it's doing. So, Black Eye Technologies have created a unique system which helps farmers to conserve water while growing crops. And we all know that water is an increasingly scarce resource. 10 or 15 years down the line, water is going to be really scarce. So, this is something that farmers are desperately in need of. And, these technologies can really help combat this problem. And Black Eye has also launched two other products. I'm not going to spoil the show here. I'm not going to tell you about that, but again, these products are also equally disruptive. They are changing the world that we live in. So it's very exciting, the stuff that these guys are doing. And when I first spoke to Amandeep, right, I was amazed. All their products had the potential to bring great impact to the society and to the world as a whole, and they were truly disruptive in nature. And Amandeep is that kind of a person who is not driven by money. He wants to create meaningful impact, he wants to bring change, and he wants to create a legacy. So Amandeep and Harminder, welcome to the show. It's great to have you guys. Thank you, Siddharth. Thank you for having us. Thank you, Sid. So before we begin, just for the audience as well, tell us something about your respective backgrounds and how you got into creating all these disruptive technologies, and how you guys came up with the idea to start Black Eye Technology. Okay, I'm Amandeep Srivastava. I've started my journey as a computer science engineer in 2013 in PTU, and then I have pursued MTech in AI, and then we are developing some IoT and AI stuff with the vision of healing the nature with the help of technology. We have met in college. We were college mates from 2013, and in 2016 we have just shared this thing in Harminder's house. कि just करेंगे यार साथ में कुछ करेंगे. Then 2017 it was a last year for the college, so we had fun. We haven't studied that much. We had fun. Let's do some fun. And you know that engineering में कितनी पढ़ाई करते हैं हम लोग. ठीक है. So in the last year we got serious about this thing कि अच्छा करते हैं फिर okay done. So then we have started the thing that we will do business together. But the pain that comes from the society, that we have thought that actually both of us, that Harminder and me, actually I am also from a good family. We are from that money was not an issue for us anytime, because the family background was good for us. लेकिन हमने ये सोचा कि अगर पैसे के लिए ही करना है तो वी कैन डू दैट फैमिली बिजनेस, कोई इशू नहीं है, वो था पहले से ही सेटल्ड था. बट व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, what we are doing as the responsible citizen of India, what we are doing as a person who lives on the earth, what's our duty to mother earth. तो ये सोच के एक दिन दिमाग में ख्याल आया कि लेट्स डू समथिंग सोशली. अब इतना दिमाग में बस था, सोशली के बाद आगे क्या करना है ये दिमाग में कुछ नहीं था. लेकिन हम चंडीगढ़ में रहते थे, एंड आई मस्ट से कि चंडीगढ़ में मैं और हरमिंदर वी वर इन ट्रेनिंग पीरियड पे थे, और हमें ना पानी की एक प्रॉब्लम थी. ठीक है. तो पानी की बॉटल जो थी, जो बड़ी 20 लीटर वाली बॉटल आती है, दैट वाज अ प्राइस ऑफ 40 रुपीस. और कुछ प्रॉब्लम्स ही आई, इमीडिएटली दैट प्राइस हाइक टू 80 रुपीस एंड वी हैव टू पे दैट. तो एक दिन ऐसे ही रात को खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर वी वर डिस्कसिंग दैट कि यार कल को अगर ये पानी 500 रुपए लीटर भी बिकेगा तो जनरेशन विल हैव नो ऑप्शन. और द बेसिक जो पानी का सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है पीने के लिए, हम ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज करते हैं. एंड देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट हाउ ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड बीइंग यूज्ड in our country. You won't believe कि 1/3 of the groundwater extraction पूरे वर्ल्ड का इंडिया करती है, और we yearly 251 cubic kilometer पानी हम हर साल निकालते हैं. ठीक है. और उसका 1/10 भी रिस्टोर नहीं करते. Now the problem was कि ये ग्राउंड वाटर जाता कहाँ है. तो 89% of that particular groundwater is being used in irrigation, और उस 89% का 48% वेस्ट होता है इरिगेशन, क्योंकि उतने पानी की जरूरत फसल को नहीं होती. Wow. And then we decided to work on that particular point कि हम irrigation में पानी को बचाएं.
and the rest part, design part and all thinking, and the other thing was the Harminder's part. So Actually, Sid, you will be amazed to know that जो 1 किलो चावल है उसकी प्रोडक्शन में हमें 5,000 लीटर पानी लगता है. मतलब Wow. from starting to end. Shit. 1 kg rice requires 5,000 liters of water. I'll stop eating rice. तो That's. एक्चुअली पंजाब एंड हरियाणा दे आर नॉट बेसिकली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. यहाँ पे कभी मतलब ट्रेडिशनली यहाँ पे खेती नहीं होती थी राइस की. राइस इज क्रॉप ऑफ सदर्न स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु और मेघालय टाइप. पंजाब एंड हरियाणा बोथ दे आर प्रोड्यूसिंग राइस फॉर मनी. सो हमने सोचा कि हम राइस के लिए डिवाइस क्यों ना बनाए. Yeah. Like तो हमने like we made this device. In starting we faced many difficulties, like we didn't get any raw material. Basically India is not an electronic market. India does not produce any electronics on its own. सारा चाइना से import होता है. So we face difficulties. There is no PCB manufacturer in India which is good or reliable. In North India there is zero. In South India you may get some companies, but in North India there is zero. So there was design problems and हमें कुछ ज्यादा फिर भी पता नहीं है because we are tech guys. Yeah. So some people helped us, like from our families. But like, so my question is, what does the device do? So you Yes. created the device, but how is it installed in the farms, and how does it work? Can you tell us something about I'll that? explain. Yes. It's a handheld device. Basically, छोटी सी device है. It has 5 parts. One is main device, and it has 4 modules, and they all are connected through Bluetooth. So are those the modules are fitted in the farmer's land or in the soil, or how does that work? The basic working of actually the device name is Irrigation Alert version 2.0, because 1.0 was basically only for rice, because we had a vision to conserve water in rice only. But now from some suggestions we have thought that let us calibrate 4 or more crops, like to 20-25 crops for this particular device. It is the collection of 5 devices. 4 are responders, one is the main device. All 5 are connected wirelessly, and it is capable to handle the irrigation system of 1 hectare land, that is 2.5 acre. ठीक है. होता क्या है कि आफ्टर द फर्स्ट इरिगेशन यू हैव टू सेलेक्ट द क्रॉप दैट इज शोन इन द फील्ड. लाइक आपने राइस लगा रखा, आपने व्हीट लगा रखा, आपने मेज लगा रखा, आपने कॉटन लगा रखा है. आपने डिवाइस पे जो है क्रॉप सेलेक्ट करके उसको पहले इरिगेशन के साथ लगा देना है. ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक लेंथ दैट इज गिवन ऑन द कैटलॉग. ठीक है, और उसके बाद से जब भी दैट पर्टिकुलर क्रॉप विल नीड वाटर, जब भी उसको पानी की जरूरत होगी, या उसके पीएच की हेल्प से वी आर आल्सो कैलिब्रेटिंग द फर्टिलाइजर पार्ट आल्सो, जब भी उसको पानी या खाद की जरूरत होगी, वो एक नोटिफिकेशन और एक एसएमएस किसान के मोबाइल और अगर स्मार्टफोन है तो नोटिफिकेशन पे वो भेजेगा. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द पंप विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप. आपने पंप शुरू किया, जब पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी, इट विल अगेन सेंड अ मैसेज एंड अ नोटिफिकेशन ऑन द मोबाइल ऐप कि स्टॉप द वाटर सप्लाई. इट्स वेरी इजी टू हैंडल. आपको केवल रॉड्स कनेक्ट करनी है डिवाइस के साथ और उसको मिट्टी के अंदर डिग करके डाल. ठीक है, और So उसके बाद से इस वे में व्हाट वी हैव टेस्टेड इन राइस में हमने टेस्ट किया था, व्हीट में हम अभी टेस्ट कर रहे हैं इस साल. राइस में हमने टेस्ट किया था पिछले साल, वी गॉट, क्योंकि इस साल हम टेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज कोविड वाज देयर. हमने राइस में टेस्ट किया, वी हैव सेव्ड 40 to 42% ऑफ वाटर विद द सेम प्रोडक्शन. that's amazing. That's awesome. एंड इट वाज अ सक्सेसफुल थिंग. और ये एक्चुअली ना, आप जैसे यू नो, इट्स लाइक अ फैन. आपने घर में लाया, इंस्टॉल किया, बटन दबाया, चालू. तो जस्ट सिंपल एज दैट. डिवाइस को हैंडल करना उतना ही इजी है. पूरी डिवाइस 1 हेक्टेयर लैंड पे 27,000 कॉस्ट करती है. Okay. और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years. In Punjab and Haryana, we are trying to get a subsidy of 90%. So it will be around 2,700 rupees for one device. That will long a life of 5 years, and it will cost me about 200 rupees or about 300 rupees per year for a particular farmer. That is So just awesome. Like 200-300 rupees per hectare, right? Like, because this device has to be installed per hectare. So exactly. that's And reasonable, yeah. I must say कि all the sensors in this device is made in India in our own lab. जो डिवाइस के सेंसर्स एक्चुअली, एज द हरमिंदर वाज सेइंग अर्लियर, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा. वी हैव डेवलप्ड सेंसर्स फॉर आवर ओन.
because we were in electronics and in computer science mutually. So हमने खुद के सेंसर्स डेवलप किए. हमने 12 रुपए का सॉइल मॉइस्चर सेंसर बनाया, हमने 14 रुपए का वाटर लेवल सेंसर बनाया, हमने पीएच सेंसर बनाया 6 रुपए का. ठीक How है. is how did you like how was it possible to create sensors at such a cheap price? Because like you're telling me 6 rupees mein you've created a sensor which is just mind blowing for me. So like and of better quality. yeah, Has a how better quality and accurate data. so how are you able to create such stuff? Do you have any other kind of technology or any other method by which you created it? Or so for anyone who's any emerging entrepreneur who's listening to this, they'll wonder like how you created those things. So if you could just throw light on how you were able to create stuff on your own. I said one thing I'd like to add here. It's my quote. If you'll go on my Instagram, it's my quote. I've developed that. Just try once more and it will happen for sure. Wow. हमने ना सारा कुछ हिट एंड ट्रायल पे किया सर, A to Z. ठीक है, हम कोशिश करते गए और आई मस्ट से कि व्हेन वी वर डेवलपिंग द पीएच सेंसर, इट वाज द आइडिया ऑफ हरमिंदर कि डायोड को उल्टा करके देखो शायद कुछ बनेगा, एंड द डेटा वाज एक्यूरेट. Harminder has that instinct, like you were telling me before the show. Like he has that amazing instinct, right? Doesn't he? एग्जैक्टली. वो कहता है कि कान को सीधा नहीं पकड़ सकता तो घुमा के पकड़ लो, मतलब कान पकड़ने से. और हम वी हैव डन दैट ग्रेट स्टफ. सो पीपल गॉट अमेज्ड ऑन दिस थिंग कि यार मे बी ही इज लाइंग और व्हाट. मैं कहा आके आप लैब में चेक करो एंड वी हैव दैट थिंग्स. तो एक्चुअली इट्स अबाउट हिट एंड ट्रायल. The research is nothing but just about hit and trial, and we are doing it continuously from last 2 years. That's amazing, guys. I mean, just And we did it with the simple science, sir. That's yeah. I mean, it's simplicity is really it's the key to success, isn't it? Like just making things complicated might not work sometimes. Sometimes it's just the simple things that work out. So that's amazing. So in short, what you're doing is you just creating like your device is you also have an app through which the farmers can control the entire irrigation system, and you're saving around 40 to 45% of water which would normally have been wasted. I think that's really mind blowing. And so this is not the only thing that you're doing. Saving water is not the only thing that you're into. You're also helping industries and factories to save carbon dioxide emissions. How are you doing that? Like, tell us something about that product that you have created. So, as we all know, air pollution. I will not discuss about air pollution now. So last year, what we thought of an idea कि यार pollution बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. So let's make something out of it. It was just last year's idea. We did some research, and what we find out that जो algae है, काय, हिंदी में उसे काय बोलते हैं. It is a very good purifying element or plant. Actually, algae is considered as a plant. जो पॉन्ड के ऊपर वो ग्रीन कलर का वो रहता है जो that's the only thing, right? Yes. Yeah. It's good in purifying water as well as air. Algae has some qualities which it absorbs impurities in air or water. So algae के ऊपर बहुत research already हो रहा है in water treatment plants. So what we did, we wanted to convert that water treatment into air treatment. Wow. It was a difficult task, but we did it. The name of the device is AROG, Algae Reactor Oxygen Generator. And you won't believe the idea behind the device and the technology behind the device is just sunlight. Wow. मतलब we are doing nothing, we are just enhancing the process with the help of our senses कि जब भी AQI का level खराब होता है, it increases the level of 100, the system starts generating oxygen on a higher scale. और क्या होता है ना कि आप एक चीज बहुत कॉमन सी बात है, हम वी वर डिस्कसिंग इट. अभी एक शुरू कैसे मैं बताता हूँ. मैं ना हीटर लगा के कमरे में बैठता हूँ कभी कभी. तो हरमिंदर डजंट लाइक दैट कि वो हीटर लगा के बैठे. ठीक है. तो क्या हुआ कि एक बार हीटर लगा हुआ था और मुझे जो है दरवाजा और बाहर का ना वो दरवाजा ऊपर का खुला हुआ था. तो हरमिंदर ने बेसिक सी बात बोली कि यार ये तो साइंस है कि गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे रहेगी. तो हमने कहा यार तो तू क्यों दरवाजा खोल के जो है पंखा वो जो है हीटर चला रखा है तूने. तो आई जस्ट स्टॉप द हीटर एंड देन वी गॉट द कि आरओ कैन वर्क क्योंकि ऑक्सीजन गर्म होती है, ऑक्सीजन इजीली ऊपर चली जाएगी.
ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जो थोड़ी सी जो है ठंडी गैस होती है, वो इजिली कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एल्गीज, क्योंकि एल्गी का काम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को एब्जॉर्ब करना. We just got on the flow, and it happened in last year. Actually, I think this month was that, December was that actually. ठंड थी, हीटर की बहस चल रही थी, और we got the idea to implement RO. We had tested the module. It was Harminder's pitch, and we got some good incubation for that. We got two university collaborated in this: Punjab Agriculture University, City University in Ludhiana, and we are working in this project from last 1 year, and we have some paid pilots for that also. और ये भी है कि अभी जो है, this is the two things. One is for water, and one is for air. Yeah, so you are just like cleaning the earth all over. Pani ho gaya, hawa ho gayi. Now what next? So, and I think that this product is really amazing. Like, because I had no ideas. What I thought was that trees are the only way of reducing carbon dioxide from the air, and planting trees is the only way that we can survive. But I think you told me that algae produces 70% of the world's oxygen. So Exactly. Yes. that is Exactly. just amazing. And so what is the traction that you guys are getting through this product? Like, is it already operational in certain factories, or how is it? Do you already have customers for this product? We have actually, Siddharth. I must say, we have two our own factories, so we have implemented this there. We are working very well, and there's no effect on breathing and all, because we can't feel that we are breathing fresh air. It's that thing. But there is a satisfaction that the air quality around our factories are good. We have the implemented one of these devices as a unpaid pilot to Punjab Agriculture University in their ground, in their skill development center, so that they can also test the device, because the device has been filed for a next government project. And one more thing that I'll say, that you have asked what next. Next would be anything related to natural resources, because one thing that we have believed as a co-founder of Black Eye, it's not about Black Eye, it's not about Aman Srivastava, it's not about Siddharth, or it's not about Harminder. It's about the next generation. Actually, सिद्धार्थ, हम विरासत में क्या छोड़ गए? एक्चुअली अगर विरासत में हम केवल अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाएं, तो वो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी. ठीक है, That's right. अगली जनरेशन हमें इस बात के लिए याद रखे कि जो हमारे पहले के लोग थे, वो हमारे लिए पानी, हमारे लिए हवा, हमारे लिए एक अर्थ को सस्टेनेबल और रिलायबल बना कर गए. ठीक है, rather than कि एक धधकती हुई भट्टी बना के चले गए. That's So right. it's not about the thing we are doing current, it's not about the thing we will do in tomorrow. It's about 20-30 years later that there will be a lot of natural resources to be rely on, कि जहां पर अब, like, I like the guy Elon Musk. Oh, I like, yeah. because he has a vision to save the energy with the help of electric cars. He's the guy of vision, but he's one idea that shifting to Mars. That's another thing. I don't believe in this kind of technology. So मार्स की on जाने the के same बजाय day, यहीं पे कुछ बना लो. exactly, we have tweeted him on that also. We have tweeted him on that. Why you are continuously focusing on Mars? He has a different perspective about that, but anyways, so also one idea that I have for you guys is, if you could create this devices, now you've created only for factories and industries, but what about normal households? If this device, like something like this, could be created for a normal house, I would be the first person to buy your product if you create it. So probably something to just think on, maybe. uh, we are planning to manufacture this. Actually, right now it's not in process, but we are thinking in next year maybe we will develop this device into household device. Do let me know whenever you do Yes. that. I want to, because the problem is, we're so busy making money, we forget about our health and about the quality of the air that we breathe and about the food that we eat. So like Amandeep mentioned, 20 or 30 years down the line, all these things are gonna matter. And it's great that you guys are just helping India push forward through to a better future. And I just want to talk to you about one another product that you also have created. So you guys are unstoppable. Like, you've already created two amazing products, but there's also a third product in the pipeline, which is called Van. Tell me something about that. VAN is basically stands for Vehicle Accident Notification.
We have realized actually in winters na, we used to travel last year in winters, we used to travel a lot, like to Raipur, to Delhi, to Bihar, or some to Patna ya Gorakhpur. We have seen that a car is transporter vehicle is accidented on the road, and it's not getting responded. The locals are helping them, but ओनर को एक दिन बाद या 2 दिन बाद पता लगता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, एंड दैट इज अ सैड थिंग. ठीक है. तो अगर इफ आई एम द ट्रांसपोर्टर और मुझे पता हो कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट महाराष्ट्र में कहीं या आसपास या बैंगलोर में कहीं हो गया है, तो आई नो अ गाइस सेड जिसको मैं फोन करूंगा तो मे बी वो उसके नियर हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो गाड़ी तो बात की बात है, बट जो उसमें लोग हैं उनकी जान बच सकती है. दे कैन बी ट्रीटेड वेल. Yeah. So we have developed this kind of thing. Actually, it was an idea of basic IoT कि हम एक GPS डिवाइस बनाएंगे, क्योंकि हर स्टार्टअप को चलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है. तो एक टाइम ऐसा आया जहां पर हमारा विजन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ. सो वी ऑल्सो थॉट कि हम थोड़ा कॉमर्शियलाइज हो जाए, हम थोड़े पैसे भी कमाएं. ठीक है. तो हमने ये कहा कि चलो लेट्स डू दैट. फिर हमारा विजन, अब यू नो दैट कि अगर किसी चीज का विजन हो और एक जो एंटरप्रेन्योर है आपके, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आप पागल एंटरप्रेन्योर हो हम दोनों के जैसे, ठीक है, तो तो आपका विजन आपके हर प्रोडक्ट में घुस ही जाएगा. यार ये करते हैं, इससे क्या पता इससे ये चेंज हो जाए. ठीक है. तो हमने उसमें भी अपना एक दिमाग डाल दिया, उसमें हमने वैन डाल दिया. इसमें एक वैन कर देते हैं ताकि जो भी इस गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं भी अगर होगा तो इट विल इमीडिएट सेंड द जीपीएस लोकेशन टू द ओनर्स मोबाइल ऐप एंड ऑन द एसएमएस लेवल. हमने जो भी क्लाउड पे काम किया ना, दोनों पे किया. हमने एसएमएस पे भी कर रखा है, हमने मोबाइल ऐप पे भी कर रखा है, ताकि अगर नेट बंद भी है तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू दैट जीपीएस लोकेशन. Yeah. ठीक है. तो ये एक आइडिया था. इट्स नॉट इट्स आउट ऑफ पाइपलाइन नाउ. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट विद अ बिग कंपनी वेरी सून, ताकि जो एक बेसिक रिस्पॉन्ड और वो क्या कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का वे है वो चेंज हो जाए. That's great, and I wish that you roll this product out as soon as possible, because I think this is a really some pain point that is not being addressed right now. I don't know if any other company is doing it, but it's very essential that whenever a vehicle is involved in an accident, there's a real time response, like within 5 or 10 minutes. There's some sort of an action which is taken. So again, that's also a really good piece of technology that you guys are developing. So apart from this, any other products or services in the pipeline? Yes, there are some. Wow. We are doing research on a medical device. Actually, in COVID, we thought हमारे पास कितने ज्यादा केसेस आ रहे थे. People are admitted in hospitals, but staff उनको कोई देख नहीं रहा. Due to fear of COVID, nurses and other ward boys, they are just neglecting them कि नहीं यार हमें भी COVID हो जाएगा, हम जा ही नहीं रहा कोई वार्ड के अंदर. What we thought that कि यार ऐसे तो चलेगा ही नहीं. In this pandemic, अगर आपका ख्याल ही नहीं रखा जा रहा हॉस्पिटल में तो कैसे चलेगा. अगर देखा जाए तो नर्सेज की तरफ से भी सही था, बिकॉज दे वर फियर, वो डर में थे कि यार हमें कोविड हो गया तो हाउ वी विल मैनेज. सो व्हाट वी थॉट कि हम इससे भी आईओटी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ. लाइक हमारा क्या, हम हर एक चीज में आईओटी लगा देते हैं. वो मैं समझ गया हूँ अभी तक तो कि any idea that comes, it's technology will be involved in it. So which is great, which is amazing. So yeah, cloud is our love. क्लाउड इज आवर लव. हम हर चीज को क्लाउड पे डालना चाहते हैं कि इसको क्लाउड पे डालो और इसको जो है घर पे बैठे कंट्रोल करो. तो व्हाट हरमिंदर हैज सेड कि हमें ना एक डिवाइस का एक पिच हुआ कि यार हम, क्योंकि अब रेस्पिरेशन सिस्टम का ही सारा पंगा था कोविड में, तो हमने क्या किया कि ईसीजी, एचआरवी और ब्लड प्रेशर्स, क्या कहते हैं, ऑक्सीमीटर्स का डेटा हमने सीधा एक डिवाइस पे काम करना शुरू किया कि जो सीधा वेंटिलेटर से कनेक्ट हो जाएगा और उसका डेटा क्लाउड पे सेंड करेगा. ठीक है. तो अब जितने भी वेंटिलेटर हैं सबके साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर दी, सबका डेटा क्लाउड पे. तो एक सिंगल डॉक्टर चाहे तो अपने कमरे में भी बैठ के, चाहे अपने घर में बैठ के, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को एक साथ अपने वेब स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की ऐप पे मॉनिटर कर सकता है और उनको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है थ्रू दैट डेटा. अब उसने केवल मेडिकेशन रिकमेंड कर दी कि फॉर दिस पेशेंट आई हैव दिस मेडिकल रिकमेंडेशंस, तो केवल एक आदमी चाहे तो उसको वहां पर हैंडल कर सकता है. या फिर ये भी हो सकता है कि आप वो डिवाइस घर पे लाके लगा लो और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, तो घर वाले ज्यादा बेटर केयर कर सकते हैं आपकी.
ठीक है, I'll discuss a personal case. हमारे घर में भी there are guys जो हमें कोविड से इन्फेक्ट हो गए हम लोग, तो हमने घर पे ही किया, और एक सिनेरियो ऐसा आ गया था सिद्धार्थ कि लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर दीज रीजंस वी हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि आप घर पे उस डिवाइस को लगा लो, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे या अपने घर पे बैठे मॉनिटर करके मेडिकेशंस दे देगा, ठीक है। देयर इज वीडियो कॉल्स के ऑप्शन है, सब कुछ है, और केवल उसको चाहिए क्या, मेडिकल डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इन फ्यूचर कि ऐसा कोई पैंडेमिक आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक वे होगा। I mean, not only for COVID, this is a universal thing that you will be addressing, because COVID is probably your idea generated out of COVID, but this is something which could have a long-lasting impact for every patient out there. Not only for COVID, any other disease, be it cancer, be it any critical disease. What happens is, if you can't visit the hospital, the doctor can directly see your data through the cloud and probably respond through a video conferencing call or whatever. So again, I think that's also a very essential technology, and all the best for this product. When do you plan to roll this out? It will take more 4 months because ICMR approval Yes. is pending. In ICMR March approval or in April. Okay, cool. So that's not a lot of time, like 4 5 months, and that your product will be operational. So awesome. uh okay, I think we have covered a good ground here, and I think we've covered a lot about the business. So any other thing that you guys would like to add about the company? Anything like about the company, about your personal life, any other thing that you guys would like to add? I'll add one thing. Today, in today's world, everybody wants to be an entrepreneur. Most of the people, most of the new students are coming out that कि और कोई भी reason हो सकता है पीछे, जॉब नहीं मिली, let's be an entrepreneur. ये नहीं किया, let's be an entrepreneur. Add a vision to your entrepreneurship. Add a vision to your startup. Not only for commercials, not only for finances, financial vision or economical vision. Add a vision like that you should be contributing towards the society. You should be contributing towards your mother earth, because earth है तो हम सब हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा जी, सीधी सी बात है, ठीक है। और ब्लैक आई के लिए फ्रॉम द ब्लैक आई, बिकॉज me and Harminder are two different people, but we have Black Eye as a common thing. So Black Eye is not only a company; it's an organization working with the vision of healing the nature with the help of technology, and that's all said. Amazing. Amandeep and Harminder, it was a pleasure having you guys on the show. And I wish you Same. all the best for all the ventures that you take. May you keep creating technologies. हर चीज में आप IoT को लेके आओ. I just want, and I really want you guys to succeed, especially with that CO2 thing, right? I think that could be the biggest thing of this decade, because it has a lot of potential. So I'll keep tabs on the company and wish you all the best for everything that you guys do. Thank you, sir. Thank you so much for having us here. Thank you, sir. That does it for this edition of Vyapar. If you want to learn more about what Black Eye is doing, I'll keep the links in the description, their website and their Instagram page. Do check it out. They are doing amazing stuff. If you want to learn something new, or you want to learn something disruptive, you can follow their page and let us know what you think of the show. You can reach out to us at vyaparpodcast@gmail.com. Take care, and we'll see you next week.